अच्छा वही हम लोग कर रहे थे मई जून 2020 पेपर 1 वेरिएंट 1 2020 पेपर 1 वेरिएंट 1 राइट। और क्वेश्चन 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9 एपीजीपी। An arithmetic progression has a second term of 14 and a sum to 21 terms of 84। आगे नहीं पढ़ना, पहले इसका डेटा बनाओ कि इसका डेटा क्या बनेगा। राइट डाउन द डेटा। Saim, can you mute yourself? तो इसका डेटा बनेगा सेकेंड टर्म ऑफ 14। सबसे पहले तो ये एपी है। यू शुड ऑलवेज मेंशन द प्रोग्रेशन फर्स्ट। T2 is equals to -14 and Musa, what should be the second data? Sir, S21 equals 84. S21 is equals to 84। और मतलब फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, ऑल्दो इट्स गिवन इन द पेपर, लेकिन याद होना चाहिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -14। याद रहे n की वैल्यू 2 है तो n माइनस 1 1 बन जाएगा, तभी ये 1 डी है। एंड एपी के सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी is equal to 84। What I want you to do is 2 को वहां मल्टीप्लाई कर दो और 21 को वहां डिवाइड कर दो। आई थिंक 8 आएगा और फिर पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले लो। आई वांट समबडी टू कंफर्म कि सेकंड इक्वेशन यही आ रही है या कुछ और आ रही है। कंफर्म। ओके solve them simultaneously। I am waiting for the answers. A 16 minus 16. A is 16 Minus 16. minus 16 and D Plus 2. plus 2. But is the question asking us to find A and D? I don't think so. The question is asking us to find the first term, yes, which we've already found, and the 21st term of this progression. Let's find out the 21st term. A plus n minus 1 into D.
Is it 24? Yes. Okay. Part B. Geometric progression. A geometric progression has a second term of 27p square and a fifth term of p to the power 5. The common ratio is r such that r is between 0 to 1. ये तो extra information है जिसका भी मुझे कोई काम नहीं है. Find r in terms of p. वो actually concept सारा same ही है. दो equations बना के simultaneously करेंगे. बस उसने क्वेश्चन को मुश्किल बनाने की कोशिश तो की है लेकिन वो मुश्किल बना नहीं सका क्वेश्चन को. Second term of 27p square. Let's mention the progression first. It is gp. T2 is equal to 27p square and T5 is equals to p power 5. Mohammed Saim TCR. What is the formula for term NGP? AR की power n minus 1. AR की पावर n minus 1. तो ये बन जाएगा AR की पावर 2 minus 1 which is 1 is equals to 27p square and AR की power 5 minus 1 is 4 is equals to p power 5. Let's make A the subject from the first equation. And let's put this into the second equation. So you have 1 minute to find R in terms of P. So what do you think should be the cube root of P cube upon 27? P upon 3. Yes. P cube का cube root P, 27 का cube root 3. But I think 2 marks are not justified for this. At least 3 marks का तो होना चाहिए था इस question को. Next part, hence यानी कि previous answer को use करते हुए find in terms of P the sum to infinity. Sum to infinity का formula होता है A upon 1 minus R. अब मुझे R की वैल्यू तो मिल गई. प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ A as well क्योंकि आपको A की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी. ट्वेंटी सेवन पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ,
r, which is p upon 3. I'm using a division sign and you should know why I'm using a division sign. मैं नहीं चाहता कि फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाए. मास कितना आएगा ए? Okay, Mars is not in the class, I think. Mohammad Saim, the system is also not. क्या हो गया? बच्चे सारे गायब होते जा रहे हैं. नेट बंद हो गया क्या? मूसा फहीम, ए कितना आएगा? सर 81p. 81p. So now let's find the sum to infinity. इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. Again, I should have used a division sign. हमें डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना चाहिए. डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करो और मुझे बताओ कितना आएगा. 243p upon 3 minus p. ठीक है, 243p अपॉन 3 माइनस p. Part 3. Given that the sum to infinity is 81, find the value of p. So 243p upon 3 minus p is equal to 81. ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, so I'm not going to do it. Please solve this yourself. And tell me the value of p. Uh, 3 upon 4. 3 upon 4. I hope you all are getting 3 upon 4. Musa, are you value 3 upon 4? Yes, sir. Okay. Trigonometry. Next question. Proving the identities. What is the first step? Simplification. Common LCM या formula. Simplification में क्या क्या आता है? Common LCM या formula. So what do you think I should do first? Common तो है नहीं. LCM लगाऊं या फिर sec थीटा का formula लगाऊं पहले? LCM. बिकॉज ये इसी ऑर्डर में प्रायोरिटी होती है. कॉमन एलसीएम फॉर्मूला. तो ये प्रायोरिटी वाइज लिखवाया है मैंने आपको. फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी. सो लेट्स टेक एलसीएम फर्स्ट. तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा माइनस 1. बच्चे माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाते, गलत करके आते हैं फिर वो पेपर में. एंड देयर इज नथिंग आई कैन डू if you are not habitual of putting a bracket after the minus sign. Denominator is always a square minus b square. ऐसे क्वेश्चंस के अंदर माइनस से ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर लो. ये बन जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. लेकिन ये इसके बराबर तो बना ही नहीं, अभी बनेगा भी नहीं. अभी तो सिर्फ मैंने सिंप्लीफाई किया है. अभी आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर आप सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख दें? 1 अपॉन Tan square. cos स्क्वायर थीटा. या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं. यू कैन अप्लाई आइडेंटिटी.
है ज्यादा बेहतर तो वही है जो हमने सीखा है कि भाई हम वी विल कीप ऑन सिंप्लीफाइंग until no further simplification is possible. Now that no further simplification is possible, I should apply identity. मूसा मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी लगा। किस पे लगाऊं, न्यूमरेटर पे या डिनोमिनेटर पे या दोनों पे? कीपिंग इन माइंड कि मेरा फाइनल आंसर ये होना चाहिए। सर डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर पे, वेरी गुड, सिर्फ डिनोमिनेटर। 1 - cos² थीटा इज sin² थीटा। तो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर tan स्क्वायर नहीं होता, cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर cot स्क्वायर होता है। Hence solve। ओके, क्या ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है? एक छोटा सा चेंज आया है। व्हाट इज दैट माइनर चेंज? कैन एनीबडी टेल मी? Theta is replaced with 2x. थीटा इज रिप्लेस्ड विद 2x। तो हमारा आंसर भी वही होगा जो पिछला आंसर था, बट आई एम गोइंग टू रिप्लेस थीटा विद 2x। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। इसकी जगह पे मैं ये आंसर लिख दूंगा क्योंकि इसका आंसर मैं पिछले पार्ट में निकाल चुका हूँ। बस थीटा की जगह पे मुझे 2x लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू 6। ओके मोहम्मद साइम, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? वो अपॉन tan स्क्वायर और फिर रेसिप्रोकल करते हैं। अच्छा साइम, मैं तो सोचा था पहले ये कॉट से पहले वाला 2 वहां ले जाऊं। ये गलत है सही है? सही है। और फिर कॉट स्क्वायर को क्या कर दूं? 1/tan स्क्वायर। तो ये जो कॉट स्क्वायर के साथ 2x है, ये 2x ऊपर रहेगा या नीचे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये टैन का एंगल बन जाएगा, जो कॉट का एंगल था वो अब टैन का एंगल बन जाएगा। ठीक है, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई या वी कैन टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स। अब साइन मुझे क्या करना होगा? अल्फा निकाल के वैल्यूज निकाले। पहले डोमेन चेंज कर दें। सबसे लेट्स चेंज द डोमेन। सबसे पहले तो हमें डोमेन चेंज करनी चाहिए थी। हमारा एंगल 2x है, लेट्स मल्टीप्लाई थ्रू आउट विथ 2x विथ 2। तो मेरी डोमेन बनेगी -180 से लेके 180 डिग्रीज तक। दिस इज माय न्यू डोमेन। लेकिन साइम ने बोला आप अल्फा निकाल लें, लेकिन अभी हम अल्फा नहीं निकाल सकते, अभी एक स्टेप और है अल्फा निकालने से पहले। एंड व्हाट इज दैट स्टेप? बताओ साइन, अल्फा तो नहीं निकल सकता अभी, एक चीज और करनी पड़ेगी। अंडर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट लेते वक्त क्या नहीं भूलेंगे? प्लस माइनस। प्लस माइनस। tan 2x is equal to +-1/√3, which means all 4 quadrants। लेकिन मेरी डोमेन मुझे तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में जाने की इजाजत नहीं देती, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे -180 तक भी जाना है। -180 तक भी जाना है तो वो तीसरा चौथा क्वाड्रेंट तो आ गया उसके अंदर। So I'm not going to reject any quadrant. Can anybody tell me अल्फा कितना आएगा?
30. 30 डिग्रीज। जब भी हमारी डोमेन नेगेटिव में जाती है, इट इज ऑलवेज बेटर टू ड्रॉ द डायग्राम। वैसे तो डायग्राम बनाना ही तब चाहिए जब डोमेन नेगेटिव में जाए। सो लेट्स मार्क और अल्फा इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। ओह, हमें चारों में लगाना पड़ेगा। तो मूसा, पहले मैं नेगेटिव साइकिल में जाऊं या पहले मैं पॉजिटिव साइकिल में जाऊं? सर पहले नेगेटिव में चलो, मर्जी होती है, पहले नेगेटिव में चले जाएं। नेगेटिव में भी पहले ज्यादा वाले नेगेटिव का आंसर निकालते हैं। ज्यादा नेगेटिव जो सबसे छोटा आंसर होगा। मूसा, ये कितना होगा? सर नेगेटिव 150। एक्सेलेंट। 180 माइनस 30 150, बट नेगेटिव 150। नेगेटिव 150 इक्वल्स टू से पहले क्या आएगा मूसा? सर 2x। 2x। ओके, उसके बाद ये निकाल लेते हैं मूसा, ये कितना होगा? -30। -30। अब पॉजिटिव साइकिल में चले जाते हैं, ये कितना होगा? 30। 30। और आखिरी आंसर 150। 150। चारों एंगल्स को 2 से डिवाइड कर दो। Error, are you getting the same 4 answers? Yes, sir. Okay. Part B. कितने मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है ये? 3, 5, 8 and 4, 12. 12 marks only for the equations of trigonometry. Sketches अलग आते हैं पेपर में, उसके अलग मार्क्स। Anyways, how is this question different from the previous parts of the question? How is this part different? ये different क्यों है? Radians instead of It is in degrees. radians. Very good. ये वाला पार्ट रेडियन मोड में होगा, जैसे कि पूरा पेपर ही वैसे तो रेडियन मोड में होता है, except when degrees is mentioned in the question. Okay, so Erad, what should be the first step? Cosec can be turned into 1 upon sine. Okay, but if I were at your place, I would have changed the domain. मुझे बताइए डोमेन कैसे चेंज होगी? Input 0 instead of y and input 2 pi instead of y. अच्छा, आप ये करते हैं, आप इसमें 0 पुट करते हैं और फिर 2 पाई पुट करते हैं। Okay, that Yes, is sir. also a method, it could be, but what I do is, मैंने तो बच्चों को ऐसे समझाया कि अगर एंगल पाई अपॉन 3 है, y प्लस पाई अपॉन 3 है, तो y प्लस पाई अपॉन 3 करने के लिए मुझे थ्रू आउट क्या करना पड़ेगा यार? Add pi upon 3. Add pi upon 3. So it is 0 will become pi upon 3, y plus pi upon 3 and 2 pi plus pi upon 3 आप मुझे कैलकुलेटर से करके बता दो। 7 pi upon 3. 7 pi upon 3.
What I want you to also tell me are the decimal values of these, ताकि मुझे पता हो कि मुझे किस पे स्टार्ट करना है और किस पे खत्म करना है. So pi upon 3 in decimal is 1.047. 1.047. या मैं छोटा सा लिख देता हूँ, इतना छोटा कि एग्जामिनर को पता ही ना चले. 7 pi upon 3. 7.33. Okay, now let's start solving the question. Erad has already told us कि भाई सबसे पहले कोसेक को 1 upon साइन कर दें, और जो कोसेक का एंगल था वो अब साइन का एंगल बन जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या रेसिप्रोकल कर लें. In either case you will get sin bracket y plus pi upon 3 is equals to 1 upon 2. जल्दी से मुझे अल्फा बता दो कितना आएगा. pi upon 6. और क्योंकि मेरी डोमेन नेगेटिव में नहीं जा रही, आई एम नॉट ड्राइंग द डायग्राम. इक्वल्स टू से पहले आएगा y plus pi upon 3. Oh, I forgot to mention the quadrants. Which two quadrants is sign positive in? 1, 2. 1, 2. So for the first quadrant, it's the same. And what do we do for the second quadrant? Pi minus alpha. Pi minus alpha. So we are going to get 5 pi upon 6. Also, did we notice the decimal value of this? क्या ये हमारी डोमेन के अंदर आ रहा है? Is this inside the domain? इसकी डेसिमल वैल्यू आ रही है 0.523. हमारी डोमेन किससे स्टार्ट हो रही थी? वो तो 1.047 से स्टार्ट हुई थी. और पेपर में we get so engrossed in the question and solving the question that we forget the domain. हम डोमेन तो भूल ही जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप ये एंगल लिखेंगे नहीं, आप इसको लिख के कैंसिल करेंगे. क्यों? क्योंकि अभी आपने अगली साइकिल में जाना है. आपने एंगल्स निकालते रहने हैं जब तक आप 7.33 को एक्सीड ना कर जाएं. तो जब आप अगली साइकिल के एंगल्स निकाल रहे होंगे तो आप पहली साइकिल के आंसर्स में 360 ऐड कर रहे होते हैं या 2 पाई ऐड कर रहे होते हैं. तो फिर अगर आप ये एंगल लिखते ही नहीं तो आप इसमें 2 पाई ऐड करना भी भूल जाते हैं. सो इट इज बेटर कि आप ये एंगल लिख के कैंसिल किया करें. सो 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6. सी इफ इट लाइज इनसाइड द डोमेन. 13 pi upon 6 जिसकी डेसिमल वैल्यू है 6.807. Does it lie in the domain sign? Yes. Yes. फिर अगला आंसर निकालेंगे, उसमें 2 पाई ऐड कर दो. वो आ रहे 17 पाई अपॉन 6 जिसकी डेसिमल वैल्यू होती है 8.9. Sign, does it lie in the domain? No. No. So we stop over here. दोनों में से पाई अपॉन 3 माइनस करो मूसा, और मुझे बताओ दो आंसर्स क्या आएंगे. Sir, 4 pi upon 3. बिल्कुल गलत बता रहे हैं. आप शायद कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे. Sir, pi upon 2. Pi upon. And now the second answer. 11 pi upon 6. 11 pi upon 6. Okay, the last question. It's an 8-mark question. और इसके parts भी नहीं.
हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दे दिया। ओके, ओ हमें डी वाई अपॉन डी एक्स भी दिया हुआ है। हमें एक कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। The question is find the equation of this curve. Error, normally how do we find the equation of the curve? We take the equation of dy upon dx and we integrate it. Yes, we integrate dy upon dx to find the equation of the curve. So, Erad, how many times do you think I should integrate this to find the equation of the curve? Integrate it twice. Late. बोले सर ने बना। We double integrate. Okay. So when we integrate this for the first time, we will get dy upon dx. dy upon dx is equals to integration of 5 cos 2x. Now, do you know why it is an 8-mark question? Because every time you integrate, you are going to put a plus c and you will find out its value. और पेपर में बच्चे भूल जाते हैं, तो उनका सोल्यूशन 4-5 स्टेप हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं कि यार 8 मार्क का क्वेश्चन क्यों है, वो भूल रहे होते हैं प्लस सी लिखना। सो एरर, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos 2x? पहले तो मुझे बताओ cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस साइन या माइनस साइन? Negative sign. बिल्कुल गलत, it is positive sign. Now tell me the integration of 5 cos 2x, error. 5 sine 2x upon 2. 5 sin 2x upon. Now, in order to find the value of c, in place of dy upon dx, you are going to put this, and in place of x, you are going to put this, क्योंकि इसी पॉइंट पे ये ग्रेडियंट है। In case if you get the correct answer in your calculator, make sure you are putting it like this in your calculator. मतलब इसका आंसर अक्सर गलत आ जाता है बच्चों, इसको ऐसे ही पुट करोगे तो सही आएगा। कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना चाहिए। किसी का 2 आ रहा है? सी की वैल्यू पूछ रहा हूँ, किसी की सी की वैल्यू 2 आ रही है? Yes. ओके, फाइनली समबडी आंसर्ड। बाकी सो रहे हैं शायद। Five sine 2x upon 2 plus 2. It is now that my equation of dy upon dx is complete. Now, in order to find the equation of y, we will integrate dy upon dx.
Erat, tell me the integration. minus 5 cos 2x upon 4 plus 2x plus c. Very good. Now, in order to find the value of c, you will put these values of x and y into the equation. तो हम y के अंदर पुट करेंगे 5 पाई अपॉन 4 x के अंदर वही सेम वैल्यू एक दो स्टेप्स दिखा देना ताकि कहीं गलत सी ना निकाल दे। ओके, सी हम यूज कर चुके थे तो इट इज बेटर दैट यू यूज डी ओवर हियर। Sir, why did you take 2 as denominator instead of 4? Oh, yes, it is 4. It is not 2. तो फिर ये भी मेरा गलत आ रहा होगा। I am getting the value of D as 5.533. Anyone else who's getting the same value of D? yes, ठीक है, तो अब हम अपने कर्व की फाइनल इक्वेशन लिख लें। -5 cos 2x upon 4 plus 2x plus 5.533. Justified 8 marks, I think. तो अगला पेपर फिर हम अगली क्लास में ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।